Right, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. तो today we have come to you with a new product जिसके डब्बे से आप पहचान भी नहीं सकते कि इसमें क्या है, लेकिन आपको हिंट हम भी दे देंगे थोड़ी देर में. खैर, without any further ado, we're gonna open this box and see what comes inside. Here, let's open the box and see what we have for you. एंड देयर यू गो. अब तो पता चल ही गया होगा आपको कि क्या निकल रहा है अंदर से. जी, दिस इज द ब्रांड न्यू आईफोन 15 प्रो मैक्स. और ये लेने का इत्तेफाक क्यों हुआ यार? आई हैव बीन यूजिंग माय 12 प्रो मैक्स फॉर नाउ 3 years एंड इवन दो इट हैजंट गॉट एनी प्रॉब्लम्स. मेरे प्यारे बच्चे की तस्वीर लगी हुई है सामने, बट इट फेल्ट अ बिट ओल्ड. और दूसरा ये कि आपको क्योंकि पता है, जिनको नहीं पता वो जाके इंस्टा पे देख सकते हैं कि आई डू अ लॉट ऑफ फोटोग्राफी, और फ़ोटो के लिए वो कैमरा थोड़ा सा पुराना हो गया था. नॉट दैट इट कैन नॉट बी यूज, आई एम वेरी हैप्पी यूजिंग इट, लेकिन अगेन इट वाजंट टू द स्टैंडर्ड्स दैट आई वांटेड एनी मोर. तो जी, ना सिर्फ मैंने ये न्यू फ़ोन अनबॉक्स करना है, बट ऑल्सो एज़ यू नो कि सब कॉन्टिनेंट का ट्रेडिशन है कि हम अपने बुज़ुर्गों, बच्चों और फ़ोन्स को कपड़े पहना के रखते हैं. तो हमने साथ इसकी प्रोटेक्टिव हाउसिंग भी ले ली है. द फर्स्ट मोस्ट एसेंशियल बिट इज़ द फ्रंट स्क्रीन प्रोटेक्टर और साथ द बैक स्क्रीन. ये भी हम आपको साथ दिखाएंगे. और जी, बॉक्स खोलते साथ ही सबसे पहले यू हैव द टाइटेनियम ब्रांड न्यू आईफोन 15 प्रो मैक्स, जो कि मैं खोल चुका हूँ, शायद एक दफ़ा गिरा भी चुका हूँ. एंड राइट आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं इनको कंपेयर करूँ आपस में, तो इवन दो इट्स नॉट बिग, लेकिन देयर कैमरा बैम्प डेफिनेटली लुक्स बिगर दैन दी प्रीवियस आईफोन एक्चुअली. एंड देयर यू गो, 12 प्रो मैक्स वर्सेस 15 प्रो मैक्स आपके सामने. And as you can see, the cameras on the 15 are much bigger. खैर, अभी मैं इसको रखने लगा and we'll do the unboxing properly and then comparison बाद में कर लेंगे. First of all, inside is the phone. इसको मैं थोड़ी देर साइड पे रखने लगा हूँ. Then next inside is वही Apple का पुराना box which comes with all the undesirables, और अभी तक पिन डालते हैं. And last but not the least is the newly designed cable. Alright, G, so the phone has been unboxed, and as you can see, we now have a protective covering on it as well. Generally outside, अगर मैं आपको इसकी build or quality दिखाऊं, तो the new thing is this new titanium finish. Not just a finish, इसमें there is a tiny bit of titanium which is also in the casing, जिसकी वजह से some people are saying it feels very very light compared to the old one. To be very honest, I don't feel much of a difference. The old one was stainless steel, जो कि आपको नज़र आ रहा है, और आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स भी उसमें शायद नज़र आ रहे होंगे. अब तो अगर नहीं आ रहे तो मैं आपको लाइट में दिखा देता हूँ. And the new one is titanium, and with the titanium brush titanium है इसकी finish, so the fingerprints are not very obvious. उधर ही पावर बटन है जहाँ पे पहले होता है, एंटेना केबल्स हैं जहाँ पे पहले होती थी. The back side of this phone is now more kind of कह सकते हो आप कि थोड़ी सी ज़्यादा ब्रश्ड फिनिश दे दिए इन्होंने. और साथ ही मेरे फ़ोन में आपको मैगसेफ की आउटलाइन शायद नज़र आ रही हो इधर सर्कल करके. द न्यू वन डजंट हैव इट येट. कैमरा बम्प्स आर डेफिनेटली बिगर देन द ओल्डर मॉडल, or they have improved the cameras. It's called the ultra wide. It has the normal focal length, which is about 24 to 30 millimeters, 35 millimeters, and then they've got the telephoto, which on the iPhone 15 Pro Max is going to be a 5x zoom, not just a 3x, which used to be in the old models. इस फ़ोन को अभी मैं बूटअप करूँगा, एंड देन आई एम गोना सिंक द टू एंड होपफुली गेट ऑल ऑफ माई डाटा अक्रॉस. एंड बिफोर I make any further of this video, I think we need to do that.
ओके जी, तो सीन इस वक्त कुछ ऐसे है कि हमारा नया फ़ोन जो है इट हैज़ बीन अपडेटेड या बूटेड कह लें। अभी बैकग्राउंड में इसकी ऐप ट्रांसफ़र चल रही है। एप्पल की सबसे अच्छी बात यह है कि व्हेन यू ब्रिंग द टू फ़ोन्स टुगेदर जो आपने बूट करने, इट विल ट्रांसफ़र द डाटा ऑटोमेटिकली। आपको किसी किस्म की भी सरदर्दी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये है कि आप इसको घंटे डेढ़ घंटे के लिए साइड पे छोड़ दो, तो ये सारा का सारा डाटा अपने पुराने आईफ़ोन से लेके न्यू आईफ़ोन पे ले आता है। एंड देन इट विल इवन गिव यू द ऑप्शन कि आप अपने पुराने आईफोन से अगर सारा का सारा डाटा अपना वॉश करना चाहें टू गेट इट रेडी फॉर सेलिंग या एक्सचेंज। दिस यूज टू बी द साइलेंस बटन, जिसको आप ऑन ऑफ करके साइलेंट मोड ऑन या ऑफ कर सकते हैं। But in the new one they've changed replaced it with what is now called an action button. And what action button is basically, आप इसको एज अ साइलेंस बटन भी रख सकते हैं, इसको आप कस्टमाइज़ करें तो यू कैन यूज़ इट फॉर द साइलेंस मोड जिसके लिए पहले यूज़ होता था। देन यू हैव द फर्दर ऑप्शन, इसको आप फोकस मोड के लिए यूज़ कर सकते हैं, सारी की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ करके साइलेंट मोड भी ऑन कर लें, या आप इसको कैमरा ऐप लॉन्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन यूज़ इट एज अ टॉर्च या मैग्नीफाइंग ग्लास शॉर्टकट ऐप। अगर आपने कोई शॉर्टकट स्पेसिफिक देना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी फंक्शन डाल सकते हैं, या इवन यू गॉट एन ऑप्शन टू डू नथिंग। The thing we are going to talk about is the external design of this new iPhone. So this is the SIM tray, which is currently empty. The volume rocker, which is still the same. Now, I've told you about the action button already. Top of the phone is entirely the same. Top pay, there is nothing special. On the right side, again, there's a power button, which sadly still does not have the fingerprint sensor, which they've introduced on the iPad, which is a bit of a shame. And on the bottom, which is now plugged in, is the new USB-C port. Sorry about the noise. So gee, you're right, iPhone now finally has a USB-C port. Everyone is talking about it. Apple कहता है उसने बहुत बड़ी innovation कर दी है, हालांकि to be very very honest, Apple has been forced by European laws to switch to USB-C. So if it wasn't for a change in the European law which mandated कि सारे electronic devices जो हैं USB-C पे shift हों, Apple would not have done it. बैक पे देयर आर 3 कैमरास। आईफोन के कैमरास का रिव्यू मैं एक सेपरेट वीडियो में करूंगा। अभी दिस इज जस्ट ए अनबॉक्सिंग एंड अ बेसिक हाईलाइट ऑफ व्हाट दिस फोन ब्रिंग्स टू द टेबल। ऑन द फ्रंट एज यू कैन सी इज माई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिसमें मेरे बच्चे की खूबसूरत तस्वीर आपको नज़र आ रही है। थोड़ी सी डिफरेंट है दोनों में इस वक्त। खैर, विल टर्न दिस वन ऑफ फॉर नाउ। And then it will give you the time जो कि ज़रा bright उसमें है, and as soon as you turn it towards you it will do your face ID and unlock it. So the face ID on this new phone, iPhone 15 Pro Max, is much more advanced compared to 12 Pro Max. faster है और quicker है, और बड़ी जल्दी जो है आपकी ID कर लेता है। Same what the second thing which is new for me is this dynamic island function जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, और इसको पीछे ले आते हैं तो I'll reduce the volume and the song is still running in this background. और जैसे ही मैं उसको क्लिक करता हूँ that becomes bigger. If there is a second app which is open which also uses dynamic island, that will show as well. आप इसको maximize कर सकते हैं, आप उसको दोबारा minimize कर सकते हैं. You can open the app very directly और उसको दोबारा minimize करके अंदर भेज सकते हो dynamic island के अंदर. The screen is now a Pro Motion display. अगेन जो इसके डिफरेंसेस हैं बिटवीन द आईफोन 15 प्रो मैक्स एंड द 12 प्रो मैक्स वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अभी जिस चीज़ की मुझे टेंशन पड़ी हुई है, ऐसा को बताया कि हम एशियन लोग जो हैं वो फ़ोन को बगैर कपड़ों के कभी नहीं छोड़ते। तो आई विल नाउ ओपन द केस फॉर माई आईफोन विच आई गॉट फ्रॉम एप्पल इटसेल्फ, एंड दिस इज़ द फाइन वोवन केस। सो एप्पल क्योंकि अब कोशिश कर रहा है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए और लेदर से दूर भागे। हाँ, डब्बे जितने मर्जी बनाएं और फ़ोन जितने मर्जी तोड़ें और रिसाइकल करें आप अपनी तरफ से, बट दिस न्यू केस इज़ द ब्लू वन जो कि मैंने लिया है क्योंकि जितने कलर से उसमें ये सबसे बेस्ट मुझे लग रहा था। आईफोन को अगर देखें जो नेचुरल टाइटेनियम जो फिनिश है, इट हैज़ अ वेरी सटल सिल्वर शीन टू इट, लेकिन मेनली द फोन इट सेल्फ हैज़ ए ब्रॉन्ज फिनिश टू इट जो कि आपको नज़र आ रही होगी ऑन दिस ब्लू बैकग्राउंड। सो विल ओपन दिस न्यू केस और मैं आपको इसकी ये अंदर से केस निकला है और इसके अंदर ये मैगसेफ कंपेटिबिलिटी है। और मैंने ओवर द इयर्स आई फाउंड आउट के मैगसेफ कंपेटिबिलिटी जो एप्पल के केसेस की है वो किसी और फ़ोन के किसी और थर्ड पार्टी कंपनी के साथ वो कंपेटिबिलिटी नहीं मिलती। अगेन विद दिस वी ऑल्सो गेट द स्पेशल इंसर्ट ऑन द साइड फॉर
our एक्शन बटन जिसको कहा जाता है, जो कि पहले सिर्फ साइलेंट मोड का बटन था. एंड इट्स वेरी इजी टू पुट these cases on. You slide it in and then you have to press a bit hard, I think. और इसकी बड़ी वेलवेटी सी फील है बाहर से. नाइक का वेरी नाइस सॉफ्ट टेक्सटाइल. इट वुड बी नाइस टू हैव इट इन डेनिम फिनिश, जो कि मुझे अच्छी लगती है काफ़ी. And then there you go. So my phone is now blue again, which is the same color as my previous phone. So if you want to watch more videos where I do a research on this iPhone, इसके कैमराज अगर सारे के सारे मुझसे सर्च करवाने हैं तो वो वीडियो भी आएगी. और इसका कंपैरिजन विद द ओल्ड iPhone 12 Pro Max, वो वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आएगी. And we will also make a separate video about different accessories that you can use with this iPhone. अभी के लिए this is my new iPhone in its cover now, and मेरे ख्याल में it is going to stay in this cover for a long time now. Either this or a different cover. I am so far liking this device, but I have to use it a bit more before I give you my final verdicts. So that was the unboxing of my new iPhone. मज़ीद वीडियोज़ के लिए subscribe to my channel, and don't forget to like this video because that will generate some traffic on the YouTube. Take care and Allah Hafiz. Instagram पे शिफा टेक के नाम से एक पेज है, उसको भी जाके देखो, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ नहीं आ रही होती है आई पुट इट ऑन देयर फर्स्ट. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.